डियर स्टूडेंट्स, हमने आज और एक टॉपिक चूज़ किया है आपके लिए, जो यूजीसी नेट सेट और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है एजुकेशन के, जे के PSC 10+2 हायर या हायर एजुकेशन रिलेटेड, या यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी जहाँ पर PhD एंट्रेंस मास्टर्स के लिए एंट्रेंस होता है, यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो इस वाले हम बात करेंगे आज कंस्ट्रक्टिविज़म के बारे में। जी एक नया कंसेप्ट है, तो नया भी नहीं है मगर इस पर बहुत सारा काम हुआ है। तो कंस्ट्रक्टिविज़म एजुकेशन में उसका ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है। इस वाले कंसेप्ट में बहुत एजुकेशन थ्योरी जो प्रैक्टिस है उसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस डाला है। तो जब हम बात करते हैं इस कंस्ट्रक्टिविज़म से, इसको स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल है डॉक्टर रईस हम डिस्कवर टीचिंग लाइन, आप हमारी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए। Constructivism is basically a theory based on the observation and scientific study about how people learn. It says that people construct their own understanding and knowledge of the world through experience things and reflecting on those experiences. तो यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्टिविज़म क्या है, थ्योरी है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पे है मबनी एंड सिस्टमेटिक स्टडी। यहाँ पर ये बोल रहा है अबाउट हाउ पीपल लर्न, किस तरह से जो इंडिविजुअल्स है वो किस तरह से दुनिया में सीखते हैं। इट सेज दैट पीपल कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग on those experiences. When we encounter something new, we have to reconcile it with our previous ideas and experiences, maybe changing what we believe or maybe discarding that new information as irrelevant. In many cases, we are active creators of our own knowledge. To do this, we must ask questions, explore, assess what we know. तो यहाँ पर ज़रूरी है कंस्ट्रक्टिविज़म हम क्या करते हैं, वी हैव टू रिकॉन्साइल आवर प्रीवियस नॉलेज। हम अपनी जो प्रीवियस आइडियाज़ है, एक्सपीरियंस है, उनको भी हम चेंज कर सकते हैं, मे बी चेंजिंग व्हाट वी बिलीव एंड एज पर द circumstances, and maybe discarding the new information as irrelevant. In many cases, we are active creators of our own knowledge. तो वहाँ पर हमें अपनी नॉलेज बनानी है। To do this, we must ask questions. हमें क्वेश्चन पूछने हैं, एक्सप्लोर करने हैं, एसेस करने हैं what we know. So ये वाला जो स्लाइड है ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म से बहुत सारे एंगल से इसको मीनिंग डिफाइन किया गया है। जैसे इसमें आपको प्रीवियस नॉलेज आइडियाज़ पे जाना है, एक्सपीरियंस पे जाना है, नॉलेज बनानी है, क्रिएट यहाँ पर ओन नॉलेज है, क्वेश्चन करने हैं, एक्सप्लोर करना है, एसेस व्हाट वी नो, उस चीज़ को एसेस करना है जो हम जानते हैं। तो जिस चीज़ से हम कंस्ट्रक्टिविज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है इसमें अगर हम बात करेंगे, ये वाला ये फेमस एक एजुकेशनिस्ट का पिक में दिखाऊंगा आपको, आप इस सब इसको जानते होंगे। ये वाला जो एजुकेशनिस्ट है, इसका फाउंडर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म हम जीन पायजन को बोल सकते हैं। इसका बहुत क्योंकि जो उसने जो जीन पायजन की कॉग्निटिव थ्योरी है, जिसमें उसने सेंसरी मोटर प्रोपोर्शन कंट्रोल फॉर्मेस्टेशन जैसी बहुत सारी दे है, स्कीमा एस्पिरेशन अकोमोडेशन इक्विलिब्रेशन का कंसेप्ट इसी वाले एजुकेशनिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ने दिए है, इसका कंट्रीब्यूशन है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का फाउंडर यही है। Earlier educational philosophy did not place much value on what would become constructive. Children's play and exploration was seen as an aimless and a lot of little importance. Jean Piaget did not agree with these traditional ways. However, he saw play as an important and necessary part of their students' cognitive development and provided scientific evidence for these views. Today, constructivism theories are influential throughout the formal and informal learning sectors. तो यहाँ पर हम अब यहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो इन्फ्लुएंशियल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है जॉन डीवे है 1952 में, मारिया मंटासरी शी आल्सो सपोर्टेड दिस वेरी मच कंसेप्ट। जीन पायजेंट है, लिगोस्की जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, उसने भी इस पर बहुत ज़्यादा काम दिया है। हैंस वन फॉरेस्टर है, इसी तरह से जॉर्ज किल्डी है एंड जेरोम ब्रूनर है। ये सारे जो है साइकोलॉजिस्ट या एजुकेशनिस्ट, उन्होंने इस कंसेप्ट को फेवर किया है, इसमें उनका इन्फ्लुएंस है। उसमें है जैसे थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या है इंपॉर्टेंट, फॉर्मुलेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इज जनरली attributed to Jean Piaget, who articulated mechanism by which knowledge is internalized by learners. He suggested that through process of accommodation and assimilation, individuals construct new knowledge from their experiences. तो ये वाला जो पॉइंट है, ये लाइन है इंपॉर्टेंट है, accommodation, assimilation, construct new knowledge from their experiences। यही मैं पूछना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट है इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म में।
इसमें जो कंसेप्ट है उसमें जैसे एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन. एसिमिलेशन occurs when a learner adds new information, basically layering it on top of the old. तो उसको बोलते हैं एसिमिलेशन. Accommodation occurs when a learner must change previous learned information before placement of new information is possible. तो पूरा पुरानी वाली इस accommodation में चेंज करता है, न्यू सीखने की कोशिश करता है, मगर उसमें क्या करता है, when a learner adds new information, तो उसको ऑलरेडी जो है उसके पास ओड जो है उसको टॉप करने की केस, क्योंकि न्यू इन्फॉर्मेशन उसके पास आई है, न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करता है अपनी नॉलेज में. Explanation जो है, assimilation is like placing files in a file cabinet, while accommodation is like needing to add new folders or rearranging existing ones. तो ये यहाँ से भी इस एग्जाम्पल के ज़रिए से भी आपको समझ आएगा assimilation, accommodation एंड explanation का मतलब क्या है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आप कर इस्तेमाल. अब यहाँ पर मैंने बहुत सारा स्लाइड्स आपको दिखाया है. एसिमिलेशन है, अकोमोडेशन है, तो इस स्लाइड को आपको इस स्लाइड को आपको देखने की ज़रूरत है. इसमें ये क्या बोल रहा है, एक सेकंड, इसमें आप देख सकते हैं. हाँ, इसमें ये है जैसे assimilation and accommodation, they are interpreted within the general concept. यहाँ पर है new concepts animals that यहाँ पर ये है, आप देख सकते हो, यहाँ से आपका assimilation and accommodation क्लियर हो सकता है. इसके बाद है इसमें ये वाला जो है, that is constructivism is a learning theory. Learning is an active process. Knowledge is constructed from and shaped by the experience. Learning is a personal interpretation of the world. Emphasis problem solving and understanding. Use authentic tasks, experiences, setting assessments. Construct इसमें content presented holistically, not in separate smaller parts. तो ये important है. इसमें constructivism में as a whole हम करते हैं, experience भी ज़रूरत है. तो ये चीज़ें हैं holistic view में. एक्सपीरियंस है, अथेंटिक टास्क्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अंडरस्टैंडिंग है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म में आता है. उसके बाद इसमें बहुत सारे है कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस दैट इंस्ट्रक्टर्स दैट मीन्स अडेप्ट करिकुलम टू एड्रेस स्टूडेंट्स सपोजिशंस, हेल्प नेगोशिएट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विद द लर्नर, पोज प्रॉब्लम्स ऑफ इमर्जिंग रिलेवेंस टू स्टूडेंट्स, एम्फेसाइज हैंड्स ऑन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस, सीक एंड वैल्यू स्टूडेंट्स पॉइंट्स ऑफ व्यू, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ द कंटेक्ट. तो ये इंपॉर्टेंट है. इसमें जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ अ प्रोसेस द इंस्ट्रक्टर, तो ये टीचर का काम है ये चीज़ें बच्चों में पैदा करना. हमारे पास बहुत सारे हैं तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम बच्चों में ये चीज़ें पैदा कर सकते हैं. ऐसा करिकुलम बनाएंगे जो बच्चों के मतलब एज पर द नीड्स हो, हेल्प नेगोशिएट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव विद द लर्नर्स, पोज प्रॉब्लम्स ऑफ इमर्जिंग रेलेवेंस टू स्टूडेंट्स, एम्फेसिस हैंड्स ऑन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, सीक एंड वैल्यू स्टूडेंट्स पॉइंट्स ऑफ व्यू, सोशल कॉन्टेक्स्ट. तो ये चीज़ें हम उनमें पैदा कर सकते हैं ताकि कंस्ट्रक्टिविज्म का इस्तेमाल कर सकते हैं इस फील्ड में फिलहाल. Constructivism is a process the instructor यहाँ पर है provides multiple modes of representation, perspective on content, create a new understanding via coaching, moderating, suggesting. Testing should be integrated with the task and not as a separate activity. Use errors to inform students of progress, understanding and changing in areas. तो ये important है dear students. ये वाला slide important है as per the examination point of view. ये वाला इसमें है और भी जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म प्रोसेस द स्टूडेंट हेल्प डेवलप ओन गोल्स एंड असेसमेंट्स, क्रिएट न्यू अंडरस्टैंडिंग वाया कोचिंग. ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला है. इसमें ये चीज़ें हम जैसे कोचिंग, मॉडरेटिंग एंड सजेस्टिंग, कंट्रोल लर्निंग, रिफ्लेक्टिंग, मेंबर ऑफ कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स, कोलैबोरेटिंग अमंग फेलो स्टूडेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम. लर्नर इज सोशल एक्सपीरियंस, अप्रिशिएट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, टेक एन ऑनरशिप एंड वॉइस इन लर्निंग प्रोसेस. तो बच्चों में जो लर्निंग प्रोसेस है उसको एनहेंस करना, बढ़ाना, कौन से तरीके हैं, चाहे एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें, सोशल एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें, कम्युनिटी मेंबर्स का, कंट्रोल, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बच्चों में पैदा करना, मॉडरेटिंग, सजेस्टिंग एंड कोचिंग के जरिए क्रिएट न्यू अंडरस्टैंडिंग, बच्चों में अंडरस्टैंडिंग पैदा करना. Constructivism is an instructional strategy, means involves collaboration between instructors, students and others community members, tailored to needs and purpose of individual learners, featured active, challenging, authentic and multidisciplinary learning. ये भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है. इसमें है कंस्ट्रक्टिविज्म इज एन इंस्ट्रक्शन, जो मैंने आपको बोला स्ट्रेटजीज है. इसमें अब बहुत सारे कंस्ट्रक्टिविज्म कैन हेल्प स्टूडेंट्स. इसमें है इट pursue personal interests and purpose, use and develop his or her abilities, build on his or her peer knowledge and experiences, develop lifelong learning. Constructivism encourages instructors to provide for each student's preferred learning styles, rate of learning, personal interactions with other learners, success. तो ये important है इसमें इस वाली स्लाइड में.
इसमें है अप्लाइंग कंस्ट्रक्टिविज्म इन द क्लासरूम pose problems that are or will be relevant to students, structure learning around essential concepts, be aware that students points of views or videos in their reasoning, adapt teaching to address students positions and development, assess student learning in context of teaching. तो ये important है इसमें उसमें है pedagogy में आप कह सकते हैं various approaches in pedagogy derive from the construction theory. They usually suggest that learning is accomplished best using a hands-on approach. Learners learn by the experimentation and not by being told what will happen and are left to make their own inferences, discoveries and conclusions. तो ये हम pedagogy में इस्तेमाल इसको कर सकते हैं उसमें है जैसे ये है ट्रेडिशनल क्लासरूम और कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या फ़र्क है यहाँ पर आप क्लियर हो सकते हैं बिगनर्स विद द पार्ट्स ऑफ द होल एम्फेसिस बेसिक सिक्ल यहाँ पर बिगनर्स विद द होल एक्सपैंडिंग टू पार्ट्स स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू फिक्स्ड करिकुलम यहाँ पर परसूट ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चनिंग इंटरेस्ट्स यहाँ पर है टेक्स्ट बुक्स एंड वर्क बुक्स यहाँ पर प्राइमरी सोर्सेज आर मैनिपुलेट एंड मटीरियल्स इंस्ट्रक्टर गिव्स स्टूडेंट रिसीव्स लर्नर इज इंट्रैक्शन बिल्डिंग ऑन ए व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो इंस्ट्रक्टर एज्यूम्स डायरेक्टिव अथॉरिटी रोल इंस्ट्रक्टर इंटरैक्ट्स negotiate with the students. Assessment via testing correlate answers. Assessment via student workers. Observation है point of view है test है process important as a product. Knowledge is inert यहाँ पर knowledge is dynamic changes with the experiences. तो ये important है इसमें आप देख सकते हैं हाँ इसमें नॉलेज इज इनर्ट तो यहाँ पर है नॉलेज इज डायनेमिक स्टूडेंट्स वर्क इंडिविजुअली स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप्स तो ये इंपॉर्टेंट है इस वाले कंसेप्ट और इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म जो ट्रेडिशनल था और उसमें दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है strengthen constructivism children learn more enjoy learning more when they are actively involved rather than passive learners education work is best when it concentrates on thinking understanding rather than on rote memorization constructivism on learning how to think and understand constructivism learning is transferable in constructivism classrooms students create organizing principles that they can take with them to other learning settings तो ये important है dear students इसमें Constructivism gives students ownership of what they learn since learning is based on students questioning and exploration and often the students have a mind in designing the assessments as well. Students in constructivism classroom learn to question things as they apply their natural curiosity to the world. Constructivism promotes social and communication skills by creating a classroom environment that emphasizes the collaboration and exchange of ideas. Constructivism assessment engages the students' initiatives and personal investment in their journals, research reports, physical models and aesthetic representation. तो ये भी important है dear students इसमें weakness है जो है biggest disadvantage is the lack of structure. Some students require highly concentrated environment in order to able to be cancelled. Constitution calls for the teachers to discard standardized curriculum in favor of or more personalized course of study based on what the students already know. This could lead some students to fail behind their earth. It also removes grading in traditional way and instilling classes where more on students evaluation their own progress, which they lead to students failing behind their without a standard grading and evaluation. Teachers may not know what the students is struggling. Since there is no evaluation in the traditional sense, the students may not be creating knowledge as their theory assistants, but just to be copying what other students are doing. तो ये important है इसमें वीकनेस ये कंटिन्यूसली ये वाली वीक पॉइंट है इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वो बाकी चीज़ें जिसकी तरह से बच्चे को कॉग्निटिव बनाएंगे ये जो है लास्ट में हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगा इसका जो है जो लास्ट वाला है कंस्ट्रक्टिव शिफ्ट्स एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग इंडिविजुअल्स एंड कॉन्स्टिट्यूलाइजिंग स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप प्रपोज स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स कंसिडर स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल्स फोकस ऑन नॉलेज कंस्ट्रक्शन नॉट रिप्रोडक्शन यूज ऑथेंटिक टास्क्स टू एंगेज लर्नर्स प्रोवाइड फॉर मीनिंगफुल प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग रिक्वायर्स नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग रिक्वायर्स रिफ्लेक्शन ऑफ प्रेयर एंड न्यू नॉलेज एक्सटेंड स्टूडेंट्स बियॉन्ड कंटेंट प्रेजेंटेड टू देम सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म होप दैट यू वुड हैव एंजॉयड इट तो इसके जो कंस्ट्रक्टिविज्म आजकल के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को समझाना और इसको अप्लाई करना है फ्रॉम क्लासरूम पॉइंट ऑफ व्यू है कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है इसमें प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल होता है रिफ्लेक्टिव बच्चों में करना और एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना नॉलेज उनको प्रॉब्लम देना ताकि वो खुद और इसका ये वाला जो फाउंडर था इसका और भी बहुत सारे ये भी इसके साथ थे और हिस्ट्री इसकी ये है तो इट वाज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्टिविज्म होप दैट यू हैव एंजॉयड तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है थैंक यू